Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm perfectly audible or not. Audible and visible too. Sure. So let's start. Let's start with the roundup of the month of June of our legal current affairs or current legal knowledge. So in this session, we'll be having a discussion about 4 important topics from the last month. Okay. Other than that, there are certain other topics as well. I'll provide the list at the end, and from where you can cover the session. That is also something which I will help you out with. Okay. So इस सेशन में आज के सेशन में we'll be covering the topics like number 1, parental conduct and child custody laws in our country. The second topic is about the balancing privacy and parentage in DNA paternity law. The third is about reproductive autonomy and intellectual disability of a person. And the fourth one is about the Punjab's anti-sacrilege law. ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's start with our session. And the first topic which we have is the custody and conduct of the parent. So the point is that recently a case was filed in a lower court in the city of Pune, wherein the court decided to award custody of a child to the mother. The court decided to grant custody of the child to the father because the court stated that the conduct of the mother was harmful for the welfare of the child. क्योंकि भाई मदर का कंडक्ट चाइल्ड के वेलफेयर के लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज थी, and therefore the court decided to grant the custody of the child to the father. But the point is that how the disputes or the issues of custody are actually decided. किन ग्राउंड्स पे कोर्ट डिसाइड करता है, which laws govern these things, and क्या क्या फैक्टर्स वहां पर कंसिडर किए जाते हैं. That is something which we'll be discussing in this particular session. So when it comes to the case, the subject was a 10-year-old boy, and the conflict was that mother relocated from Singapore to Pune with the child, accusing the father of an affair with domestic help. मदर ने रिलोकेट कर लिया सिंगापुर से, वो पुणे आकर रहने लगी उस बच्चे के साथ, and she accused the father of an affair with the domestic help, and the father sought custody relying on a Singapore Family Justice Court's order डायरेक्टिंग द चाइल्ड्स रिटर्न. डिस्प्यूट क्योंकि सिंगापुर में स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली फादर ने सिंगापुर के फैमिली कोर्ट में वहां पर केस फाइल किया, एंड द फैमिली जस्टिस कोर्ट ऑफ सिंगापुर gave an order for the return of the custody of the child to the father, and relying on that order father subsequently filed a case in Pune. Finally कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर क्या दिया, the interim custody of the child was granted to the father, and the reason which was given by the court was there was no challenge given to the Singapore order, and the child's 3 formative years were spent in Singapore, and allegations of mother attempting to alienate the child from the father. These were the primary reasons which were given by the Pune court, that why the custody of the child should be given to the father, because the formative years, the initial 3 years of the child were spent in Singapore, and there were an allegation which was imposed against the mother that the mother was actually trying to alienate the child from the father. इन सारे ग्राउंड्स पे तो कुल मिला के सिचुएशन में इट वाज द कंडक्ट ऑफ द मदर विच वाज इन डिस्प्यूट. ठीक है, इट वाज एक्चुअली द कंडक्ट ऑफ द मदर विच वाज इन डिस्प्यूट. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, just a second. Yeah, it was actually the conduct of the mother which was in dispute, and her conduct as a spouse her conduct as a spouse was questionable in this situation. But let's say if a person is not a good spouse, or his conduct can be questioned with respect to the marital duties, so are such individual not entitled to get the custody of the child? ऐसी सिचुएशन में क्या आप उस बच्चे की कस्टडी ऐसे पेरेंट के पास से ले सकते हो? So point was that does the failure as a spouse equate to a danger as a parent?
कि अगर आप फेल हुए एज अ स्पाउस तो आर यू अ डेंजर एज अ पेरेंट फॉर द चाइल्ड एज वेल. जनरल रूल क्या होता है दैट द बैड कैरेक्टर और मॉरल फेलिंग्स do not automatically disqualify from them from gaining the child custody because court always prioritizes the child's best interests. कि अगर आप एक failed spouse हो, अगर आपका moral character खराब है, that in itself will not bar you from getting the custody of the child. Then how it is actually decided? तो paramount consideration आप हमेशा याद रखना. The most important thing in a child custody battle is actually the welfare of the child, which is taken into consideration by the court. That the custody will be given to the parent, to either of the parent, depending where the welfare of the child can be actually protected or ensured. So the law which is involved over here is Hindu Minority and Guardianship Act section 13, and it disqualifies any person from guardianship, even a natural guardian also. So natural guardian is actually father and mother. They are considered as a natural guardian of the child. So Hindu Minority and Guardianship Act disqualifies any person from guardianship, even a natural guardian, if it is not for the welfare of the child. कि अगर उनकी कस्टडी में बच्चे का वेलफेयर इंश्योर नहीं हो सकता है, then the court will disqualify them from having the custody of the child. But how this welfare of the child assessed? वेलफेयर का मतलब क्या? So welfare of the child is assessed through Guardians and Wards Act section 17. Section 17 of the Guardians and Wards Act talks about the welfare of the child, and it simply says that it assesses the welfare of the child based on the age of the child, sex, religion, guardian's character or capacity, nearness to the kin, and previous relations with the minor. These are the various grounds which are considered by the court while determining that whether the person or whether the welfare of the child can be ensured in custody of the person who wants to claim the custody of the child. तो हमेशा पैरामाउंट कंसिडरेशन ना कभी भी किसी भी स्पाउस का कैरेक्टर नहीं होता है. किसी भी स्पाउस के मॉरल स्टैंडर्ड्स विल नॉट बिकम द ग्राउंड ऑन विच द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड. Custody is determined from the sole factor that where you will be able to ensure the welfare of the child, and that welfare is assessed through these different grounds. That is, you look at the age of the child, you look at the sex of the child, you look at the religion of the child, so on and so forth. ठीक है. एंड यहाँ पे फिर कोर्ट्स ने जो अलग अलग चीजों को ले डाउन किया गया है आज तक, लाइक इफ यू लुक एट द केस ऑफ मौसमी मोइत्रा गांगुली वर्सेस जयंत गांगुली in 2008, the court stated that statutory status or a parent's love cannot be the determining factor. तो आप किन फैक्टर्स पे वेलफेयर को जज करोगे? कंटिन्यूटी, दैट इज यू विल ट्राई टू एंश्योर द स्टेबिलिटी इन स्कूलिंग एंड डेली रूटीन ऑफ द चाइल्ड. भाई अब अगर एक बच्चा सिंगापुर में पढ़ रहा था आज तक, एंड आप उसे एकदम से लेके अगर पुणे आ जाते हो जहां पर सिंगापुर में उसकी इनिशियली स्कूलिंग चल रही थी, तो वेलफेयर कैसे इंश्योर करोगे? यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि भाई उसकी स्कूलिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसका डेली रूटीन कंटिन्यू होना चाहिए, आपको उसका डेली रूटीन मतलब हैम्पर नहीं करना चाहिए. देन इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड नॉन टॉक्सिक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड. नाउ पुणे के केस में क्या हुआ, द विमेन और द वाइफ was actually putting up allegation against the husband for having an affair with the domestic help, and there were allegations that she was actually trying to alienate the child from the father, that she was trying to put in those kind of things in the mind of the child, that father is of the bad character and so on and so forth. The court stated that this will not ensure the emotional stability of the child, and therefore one of the factors while determining that where you can ensure the welfare of the child is the environment wherein you can ensure the stability, emotional stability of the child. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेफ और नॉन टॉक्सिक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का अपने बच्चे को. देन डेली इन्वॉल्वमेंट, एविडेंस ऑफ डे टू डे केयर गिविंग एंड चाइल्ड्स ओन विशेस. सो कंडक्ट दैट हैज नो डायरेक्ट बेयरिंग ऑन चाइल्ड्स डेली लाइफ इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर. Any conduct of the parent, any conduct of the spouse, like failure as a spouse, if it is not having any direct failure of a spouse or failure as a spouse, not having direct impact on the welfare of the child is not a relevant factor.
तो कोर्ट करता क्या है, कोर्ट देखता है भाई केयर गिविंग कैपेसिटी आपकी, मैरिटल कंडक्ट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द चाइल्ड. सो एनी सच एक्ट और factor which is having a direct impact on the child, that too a direct negative impact of the child, will disallow you to get the custody of the child. ठीक है, any such action of yours which is having a direct impact, ठीक है, direct impact on the welfare of the child, that is a negative impact on the welfare of the child, will disallow you to get the custody of the child. बाकी आपकी केयर गिविंग कैपेसिटी, मैरिटल कंडक्ट, सारी चीजें इवेंचुअली इस फैक्टर पे आकर रुक जाती है. तो जैसे अगर अभी हम पुणे का केस देखें, एनी सच कंडक्ट दैट एक्टिवली हार्म्स द चाइल्ड्स इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी is a ground according to which the court will consider the welfare of the child or assess the welfare of the child. Now, what happened in Pune's case was the court correctly identified alienation as a tier 1 issue. Exposing the child to poisonous words against the father directly connects to the child's emotional welfare and warrants judicial intervention. कि अगर आप बार बार poisonous words अपने बच्चे के माइंड में पुट करने की कोशिश करते हो with respect to the character of your father, if you try to alienate the child from the other parent, that is something which negatively affects the emotional stability of the child. And अगर आपको कोई भी conduct eventually अगर child के welfare को hamper करता है, then that is one such situation wherein you will not get the custody of the child. And that's what the Pune court has done in this case. So welfare of the child is the paramount consideration. तो जब भी हम custody के issues को discuss करते हैं, that is the only point which is relevant. आपका marital conduct अगर चाइल्ड के वेलफेयर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, यू विल नॉट गेट अ राइट टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इन सच अ सिचुएशन. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट केस. द सेकंड इशू वाज रिलेटेड टू द इशू ऑफ प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल वर्सेस DNA test. And recently the Supreme Court of India was trying to balance the dignity of a human being with respect to DNA test and paternity disputes as well. So what was the consideration or what was the issue over here? There was a person, okay, and the name of the person was CP. And there was another person, A, who was alleging to be his son. Okay. There was a person, A, who was alleging that he is CP's son. But CP was not ready to recognize the same. ठीक है, वो पर्सन उस पर्सन को अपने सन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कभी एक्सेप्ट नहीं किया. नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स द सन फाइनली अप्रोच्ड द कोर्ट एंड आस्क्ड द कोर्ट टू ऑर्डर द कंडक्ट ऑफ अ DNA टेस्ट सो दैट द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड कैन बी डिसाइडेड. ठीक है, सो दैट द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड कैन बी डिसाइडेड. बट जब आप इस पर्सन के ऊपर DNA टेस्ट कंडक्ट करोगे, so you are in a way invading the privacy of a person, yes or no? But at the same point of time, this person also has right of identity or right to know his parentage, because once you are recognized as a child of another person, be it legitimate or illegitimate, you have certain property rights attached to the same as well. And there was an inherent, what should I say, tension which was going on between the issues of the privacy and the identity of the person. अब यहाँ पर दोनों लोगों के rights involved हैं, the alleged father and the alleged son. If you look at the side of the alleged father, there was the issue of right to privacy, bodily autonomy, and protection from frivolity. So protection from unwarranted intrusion in his personal life, which is related to his right to privacy. Then no one can be compelled to give a sample of blood for analysis, क्योंकि उसका bodily autonomy का उसका right है यहाँ पर. And protection from frivolity, that is defense against roving inquiries and baseless claims. So these were the father's rights which are involved in this case. On the other hand, son के जो rights थे, जिन चीजों को बैलेंस करना था यहाँ पर, सन के पास राइट टू आइडेंटिटी है, सिविल राइट्स है एंड इनहेरिटेंस के राइट्स हैं. द साइकोलॉजिकल नीड फॉर क्लोजर रिगार्डिंग पेरेंटेज, भाई वो एक इंसान है, वो इतने सालों से पता करने की कोशिश कर रहा है दैट हु इज हिज फादर एंड ही क्लेम्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल टू बी हिज फादर, बट द अदर पर्सन इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम एज हिज सन.
तो वो जो एक साइकोलॉजिकल क्लोजर उसको चाहिए है विथ रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंटेज, वो भी मिलना जरूरी है. दैट इज अटैच्ड टू हिज राइट टू आइडेंटिटी, राइट. Then comes establishing legitimate legal status of the person and inheritance rights as well, that is claims to property and familial assets. तो अब यहाँ पे हुआ क्या? Finally, the Supreme Court upheld an order directing a man's CP to undergo a DNA test to resolve a civil suit over the parentage and property inheritance. So CP in this case had consistently denied paternity since 1999. We are sitting in the year 2026. 1999 से वो इंडिविजुअल उस पर्सन को अपने सन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा. ही इज कंसिस्टेंटली डिनाइंग पैटर्निटी सिंस 1999. सो इट्स क्लोज टू 27 इयर्स जब से वो बंदा वो भाई क्लोजर ढूंढने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंटेज. नाउ द सन अटेन्ड द मेजॉरिटी एंड सॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंटेज एंड अ शेयर इन प्रॉपर्टी. ठीक है, सन ने मेजॉरिटी अटेन की, फिर उसने केस फाइल किया. केस फाइल क्यों किया? फॉर गेटिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंटेज एंड अ शेयर इन द प्रॉपर्टी. And crucially, the court noted there was no other evidence on record to answer the question that who is the son or who is the father. ठीक है, कोई alternative evidence था नहीं. So the point is that the court stated that if no positive answer is ever found out of the question, it is quite possible that he would forever be denied the rights he may otherwise be entitled to. अगर आप इस question का आंसर नहीं ढूंढते हो, ठीक है, if you don't come to an answer to this question, तो फिर भाई उस पर्सन के पास जो इनहेरिटेंस के राइट्स होने चाहिए थे, जो शायद अगर सीपी ही अगर उसके फादर हैं, so that person will have certain inheritance rights as well, वो उसको कभी मिलेंगे ही नहीं, right? So there is a quite possibility that he would never be or he would forever be denied the rights he may otherwise be entitled to. And इन सारी चीजों को फाइनली फिर बैलेंस आउट करते हुए कोर्ट ने सिंपली ये कहा कि भाई प्राइवेसी इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू रेफर टू ओवर हियर. इट इज द राइट ऑफ द आइडेंटिटी और द राइट ऑफ हेरिटेज ऑफ अ पर्सन जिसको हम ज्यादा यहाँ पर क्या कहना चाहिए वेटेज देंगे. एंड देयरफॉर डीएनए टेस्ट ऑर्डर वाज कंफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस. बट जब भी किसी केस में डीएनए टेस्ट कराने की बात आती है तो ऐसे आर्बिट्ररली एज अ मैटर ऑफ रूटीन आप हर केस में डीएनए नहीं कराना शुरू कर दोगे, डीएनए टेस्ट कराना नहीं शुरू कर दोगे. ठीक है, because that is an invasion of a privacy of an individual. That is an invasion of the bodily autonomy of an individual. Therefore, DNA testing is not something which can be considered as a normal course of action. ठीक है, so Supreme Court ने कुछ guidelines में lay down करी हुई हैं जिनको follow करते हुए court decide कर सकते हैं that whether DNA test should be ordered or not. So before compelling an individual to undergo genetic testing, the judiciary requires the request to pass through a strict three-pronged strategy. एक 3-step स्ट्रैटेजी कोर्ट ने वहां पर बना के रखी हुई है. एंड किसी भी केस में डीएनए टेस्ट ऑर्डर करने से पहले द कोर्ट्स आर सपोज्ड टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. एंड इफ द केस फेल्स इवन वन ऑफ दीज फिल्टर्स, द रिक्वेस्ट इज डिनाइड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी. अगर किसी भी एक फिल्टर पे वो केस फेल कर जाता है, देन द डीएनए टेस्ट विल नॉट बी अलाउड. प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल विल बी प्रोटेक्टेड ओवर दैट. व्हाट आर दीज इश्यूज? द फर्स्ट वन इज दैट इज पैटर्निटी डायरेक्टली एन इशू इन द मैटर. सबसे पहली चीज तो यही होती है कि सबसे पहले आपको यही डिटरमाइन करना है कि क्या मेन इशू ऑफ द केस इज पैटर्निटी और नॉट, दैट हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड. यू कैन ऑर्डर डीएनए टेस्ट टू डिटरमाइन द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड ओनली इन द केसेस वेयर इन पैटर्निटी इज द प्राइमरी इशू. हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर डिवोर्स का केस चल रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री और क्रूअल्टी, वहां पे आप बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना शुरू नहीं कर दोगे, बिकॉज दैट पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली एन इशू ओवर देयर. The issue directly present over there in the case is the divorce or the adultery. वहां पे बच्चे की प्राइवेसी इंफ्रिंज करने की आपको परमिशन नहीं मिलेगी. So the first thing first which the courts are required to ask is that is paternity directly an issue? If yes, अगर इसका आंसर yes होता है, then second filter is there an absolute absence of any other evidence on record capable of substituting for a DNA test? कि मान लेते हैं चलो पैटर्निटी डायरेक्टली एन इशू है, तो फिर दूसरी चीज देखते हैं कि क्या भाई और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि डीएनए टेस्ट की जगह और कोई ऐसा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हो जिसके थ्रू आप पैटर्निटी को एस्टैब्लिश कर पाओ. तो अगर एब्सोल्यूट एब्सेंस है कि भाई कोई और ऑल्टरनेटिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं which can substitute for a DNA test, which can act as a substitute for a DNA test, only in these situation you will move to the third filter.
is ordering the test in the is in the best interest of the parties and for justice. क्या भाई बेस्ट इंटरेस्ट वहां पर सर्व हो पाएगा डीएनए टेस्ट करके? क्योंकि देखो कई बार आप अगर डीएनए टेस्ट करा लोगे, है ना, एंड इफ द पर्सन इज और इफ द पर्सन डज नॉट टर्न आउट टू बी फादर ऑफ दैट चाइल्ड, then the child is considered as bastard by the society, right? Then the person will move into another kind of identity crisis. And therefore the third thing which the courts are required to ask is ordering the test in the best interest of the parties and for the justice. जब इन तीनों चीजों का आंसर yes निकल कर आए, that paternity is directly an issue, there is no other evidence on record which can act as a substitute, and it is in the best interest of the parties or for justice, only in those questions, only in those cases, the court can mandate a DNA test. ठीक है? अब जनरली हमारी कंट्री में पैटर्निटी किस बेसिस पे डिटरमाइन की जाती है? हाउ डू वी डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड? So the Indian Evidence Act and Bharatiya Sakshi Adhiniyam aim to protect the children from stigma of illegitimacy through a powerful legal presumption. ठीक है? इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अब नया हमारा एविडेंस लॉ है, it actually aims to protect the children from the stigma of illegitimacy through a powerful legal presumption, and that legal presumption is that the child is considered as legitimate. The child is considered as legitimate if the child is born during a valid marriage. अगर चाइल्ड की बर्थ वैलिड मैरिज के सब्सिस्टेंस के ही टाइम पर हुई है, the child is born during a valid marriage, or if the child is born within 280 days since the dissolution of the marriage. कि मैरिज डिसॉल्व होने के बाद अगले 280 दिनों में 280 डेज, ठीक है, अगले 280 दिनों में अगर चाइल्ड की बर्थ होती है, then the child is considered as a legitimate child of the parties. मान लो A और B है, इनके बीच में अगर डिवोर्स हो जाता है ऑन 1st of July, अब 1st of July से अगले 280 डेज के अंदर अगर C की बर्थ होती है, so according to the second point, C will be considered as the legitimate child of these two parties. और एक प्रोवाइजो वहां पर गिवन है, एक exception वहां पर given है, that to dislodge this presumption, the challenger must prove that the married parties had no access to each other at any time when the child could have been begotten. ठीक है? इकलौता एक्सेप्शन है कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टीज, जैसे मान लो A और B शादीशुदा हैं, दे आर इनटू अ वैलिड मैरिज, एंड B पिछले 2 साल से कंट्री के बाहर है, एंड A गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड C. So will C be considered as the legitimate child of A? ठीक है, क्या वहां पर C को लेजिटिमेट चाइल्ड मानोगे उन दोनों पार्टीज का? अब यहां पर पार्टीज के पास कोई एक्सेस तो था नहीं एक दूसरे का, तो इस प्रिजम्पशन को आप रिबट कर सकते हो by proving to the court, by giving evidence to the court that the parties did not have access to each other during the time period when the child could have been begotten. But other than that, अगर आपके पास ये चीज प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में the child will be considered as the legitimate child of the parties involved over there. ठीक है? अब जब यहां से legitimacy prove ना हो पाए, the cases where legitimacy cannot be proved, in those kind of situations the DNA test is authorized. But DNA test will be authorized or mandated or ordered by the court only when those 3 questions or those 3 filters get fulfilled. But earlier ना, शुरुआत में ऐसे DNA टेस्ट को कोर्ट ऑर्डर नहीं कर देते थे. जैसे in 1993 in the case of Gautam Kundu versus State of West Bengal, the court ruled that DNA test cannot be ordered as a matter of course to retain a roving inquiry. Because court का सिंपल सा कहना ये था, preventing the branding of a child as a bastard and the mother as an unchaste woman, कि हर केस में आप डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर दो, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर केस में अगर एज अ कोर्स ऑफ नेचर ऑर्डिनरी थिंग अगर आप डीएनए टेस्ट ऑर्डर करते रहोगे ना, तो इट विल रिजल्ट इनटू ब्रांडिंग ऑफ द चाइल्ड एज अ बास्टर्ड एंड द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन विल बी कंसीडर्ड एज एन अनचेस्ट थिंग. देयरफॉर हर केस में आपको डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं करना चाहिए. देन इन 2014 इन द केस ऑफ दीपनविता रॉय वर्सेस रोनो ब्रोतो रॉय, the court ruled that tests are permitted only where absolutely necessary to resolve a dispute. सिर्फ उन्हीं केसेस में आप टेस्ट ऑर्डर कर सकते हो जहां पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी है to resolve the dispute, because the court said that if the direction to hold such a test can be avoided,
it should be avoided and the legitimacy of a child should not be put to peril. अगर डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस प्रेजेंट है तो आप उसको यूज करिए. यू शुड नॉट पुट द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड एट द पेरिल इन सच अ सिचुएशन. बट यहां पे क्योंकि सीपी वाज कंसिस्टेंटली डिनाइंग टू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एज हिज ओन सिंस 1999, there were no other evidence which was available, and perhaps it was important to bring the issue to the closure from the point of view of the son. Therefore it was in the interest of the parties and justice as well, those three filters given by the court. And along with that the issue was कि भाई और कोई alternative evidence आपके पास था ही नहीं. Therefore the court decided कि भाई उस बच्चे के बाकी सारे rights जो उसको मिलने चाहिए थे, अगर वो उस पर्सन का ही सन है तो, therefore the court upheld the order which was passed by a lower court with respect to conduct of DNA test in this situation. ठीक है. So I hope the second topic is also clear to you. Now, the next topic which we have is the issue of navigating the intersection of law, medicine and reproductive rights for women with intellectual disabilities in India. ठीक है. जैसे एक प्रोसेस होती है जिसको हम hysterectomy या hysterectomy कहते हैं. It's a kind of removal of reproductive organs of a person. Removal of reproductive organs of a person. Now, when it comes to reproductive autonomy of an individual, that's a part of Article 21 of the Constitution of India. That's a part of right to life and personal liberty of an individual. It also covers reproductive autonomy of the person. And if at all you want to remove the reproductive organs of a person, you need the consent of that person. Consent becomes an essential part of that. Only with the consent of the person you are entitled to remove the reproductive organs of the individual. But those individuals who are suffering, those women who are suffering from any kind of intellectual disability, any kind of mental disability, like let's consider the situation of a Down syndrome child. Okay, any child who is suffering from Down syndrome, they are not capable of taking the decisions. Now, do we have the right to conduct hysterectomy on such an individual? This was the primary issue in front of the Karnataka High Court recently. That what about the reproductive autonomy of a child with mental disability, intellectual disability? So the issue was, the patient was a 23-year-old woman with severe intellectual and developmental disabilities. The challenge was she was incapable of understanding or managing her menstrual hygiene. She was incapable of managing that. And as a result, there were recurring infections and prolonged medical complications which were suffered by the patient because of the mental retardedness or intellectual disability, severe intellectual disability which she was suffering from, because she was incapable of managing her menstrual hygiene. Now, in such a situation, if the person has been facing prolonged infections, recurring infections, medical complications, then it would be perhaps better that you conduct hysterectomy on such an individual. So the request was that the parent requested a total abdominal hysterectomy. Now the assessment was conducted. So multidisciplinary medical board confirmed inability to give informed consent, but recommended surgery for her well-being. They were clear with the fact that because the person was suffering from severe intellectual disability and along with that developmental issues, she was incapable of giving her informed consent for the same procedure. And therefore the High Court intervened and formally permitted the procedure. Okay? But the point is, if you look at this thing now, those individuals who are suffering from any kind of a disability, the law which governs them is protection of rights of the persons with disability. अब ये चीज ये कहता है, if you look at section 10 of this act, legally prevents persons with disability from being subjected to any medical procedure leading to infertility without their free and informed consent. Okay? If you look at section 10 of the act, it says that you cannot commit any or conduct any kind of a medical procedure on person with disability
without their informed consent if the medical procedure will lead to infertility. Now, hysterectomy is a kind of a procedure which is going to subsequently lead to infertility, because that's a kind of a removal of the reproductive organ of the person. But वो चीज informed consent के बिना तो आप कर नहीं सकते. And a person suffering from intellectual disability is not capable of giving the informed consent. तो फिर आप करोगे क्या? क्योंकि forced medical procedure will amount to violation of law, and historically it was justified by the caregivers as convenience or to hide abuse. Okay, that because they are incapable of understanding their menstrual hygiene, then it's better you should remove the organs or you should conduct the hysterectomy, or to prevent the abuse of the intellectually disabled, what should I say, women or a child. But forced अगर करोगे तो that violates section 10. अगर आप कोई action नहीं लेते हो, that amounts to medical neglect, because failing to provide necessary medical care due to there was a failure or there was a fear for providing any medical care due to fear of legal repercussions कि section 10 violate होगा. But कहीं पे तो आपको solution निकालना पड़ेगा, है ना? कहीं पे तो आपको solution निकालना पड़ेगा. And फिर solution निकलेगा कैसे? When the person is not having the cognitive capacity to understand the things and give the informed consent. So the trigger in this case was severe intellectual disability preventing the understanding of medical risk and consequences, and unilateral decisions cannot be made by the caregivers or doctors, as it is strictly illegal under the Persons with Disabilities Act. And therefore the High Court intervened and applied the parents' patriot doctrine, and the court steps into the shoes of the guardian, and then the court conducts an inquiry to determine the best interest without simply substituting its own judgment. Court ने क्या करा कि चलो ठीक है, we will enter into the shoes of the guardian and we will try to take the best interest for the child, or whatever decision can be taken for the best interest of the child or the person over here. But court वहां पर ना एक medical inquiry conduct करता है, ठीक है? कोर्ट वहां पर एक मेडिकल इंक्वायरी कंडक्ट करता है, और उस मेडिकल इंक्वायरी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे देन द कोर्ट कम्स टू द डिसीजन. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड a strict institutional audit to eliminate unnecessary hysterectomies. Like in the case of Dr. Narendra Gupta versus Union of India, the Supreme Court stated that unnecessary procedures often performed on marginalized women without informed consent violate Article 21, which includes fundamental right to health as well. कोर्ट ने कहा ये जो विदाउट कंसेंट आप हिस्टेरेक्टमी कंडक्ट करते हुए चल रहे हो, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देयरफॉर द कोर्ट स्टेटेड or mandated the strict enforcement of the Union Health Ministry's 2022 guidelines to prevent unnecessary hysterectomies across all the states. तो यहाँ पर national level, state level and district level पे formation of hysterectomy monitoring committees to audit the surgeries and blacklist violating hospitals. तो एक medical board यहाँ पर भी constitute किया जाता है. The medical board makes a recommendation कि भाई क्या removal करना चाहिए, and उसके basis पे फिर डिटरमाइन किया जाता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी और सीवियर व्हाट शुड आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके कंसेंट के बिना भी क्या आप हिस्टेरेक्टमी कंडक्ट कर सकते हो? तो द आंसर इज यस, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ मेडिकल बोर्ड. ठीक है? So that's the order which was given by the Karnataka High Court, wherein they allowed the procedure to be conducted on the patient. ठीक है? And now the last topic for the month is the Punjab Anti-Sacrilege law, जिसको लेकर currently अकाल तख्त and the Punjab government दोनों के बीच में issue चल रहा है. And अकाल तख्त has actually summoned the government or the ministers or the MLA of Aam Aadmi Party to justify their stand on this law. बट ये एंटी सैक्रिलेज लॉ था क्या? देखो, सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? डीलिंग विद एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीजन और डीलिंग विद एनी टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन विदाउट रिस्पेक्ट और विदाउट द रिस्पेक्ट विच दे डिजर्व. ऐसा कोई भी एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बुक्स, द टेक्स्ट, द मोटिव्स रिलेटेड टू द रिलीजन, उनको जब आप डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते हो, उसको सैक्रिलेज कहते हैं. ठीक है? दैट इज समथिंग विच इज नोन एज सैक्रिलेज. एंड पंजाब में Sikh religion में गुरु ग्रंथ साहिब is considered as a foundational pillar of that religion. तो गुरु ग्रंथ साहिब के अगेंस्ट जो डिसरिस्पेक्ट शो की जाती थी, वो बहुत पहले से एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा था.
dealing with this issue of sacrilege. But there was a constant demand from the society. The law should be made stringent because of certain recent incidents of sacrilege being committed against Guru Granth Sahib. And therefore, finally in 2026, the Punjab government came up with Jagat Jog Shri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Act. But now it is creating a constitutional and political friction. Constitutional friction क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पर उसको चैलेंज किया जा चुका है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में. Political friction because this was being considered, or this amendment or the enactment of this amendment was considered as a violation of Nehru-Tara Singh Pact of 1959, जहां पर नेहरू जी ने वर्बली ही अग्री किया था तारा सिंह जी के साथ, ठीक है, who was a leader of अकाली दल at that point of time, कि सिख रिलीजन के रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा. दैट वाज अ काइंड ऑफ अ वर्बल एग्रीमेंट. एंड क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी ने इस एंटायर लॉ को पास कर दिया without having any discussion or consultation with Akal Takht or SGPC, the Gurudwara Prabandhak Committee. Therefore, it is creating a political tension in the state as well. But ये कैसे बना लॉ ये अमेंडमेंट क्यों आया? तो देखो 2024 से ही सिख एक्टिविस्ट गुरजीत सिंह खालसा was protesting atop a 400-foot tower in Samana, demanding harsher punishment for sacrilege offenders. फिर 2015 में एक और इंसिडेंट हो चुका था with respect to sacrilege, wherein there was which led to long-standing public demands for justice and strict action against बेअदबी. ठीक है, sacrilege of Guru Granth Sahib is considered as बेअदबी. And in 2008, the original Jagat Jodh Guru Granth Sahib Satkar Act was passed, and it was widely regarded as insufficient in its penal framework. And this led to sustained religious and public pressure on the government, and finally the government came up with a new law. एंड लॉ बड़ी तेजी में और बड़ी जल्दी पास हुआ. 9 दिनों के अंदर लॉ पास होकर एनफोर्स भी कर दिया गया. तो ऑन April 11, 2026, पंजाब कैबिनेट क्लियर्स द अमेंडमेंट बिल. ऑन April 13, it gets passed unanimously in a special session of Vidhan Sabha. On April 17th, it got the assent of the Punjab governor, and on April 20th, it was notified by the Department of Legal Affairs and came into immediate force. And that led to the friction between Akal Takht, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड पंजाब गवर्नमेंट कि आपने बिना हमारी कंसल्टेशन के इसको पास कैसे किया. नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल डिबेट अबाउट दैट. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इस एक्ट में बताया, इस अमेंडमेंट में बताया क्या गया. सो इट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ सैक्रिलेज, दैट डिसरिस्पेक्ट बीइंग शोन, उसको थोड़ा सा इन्होंने और वाइडन कर दिया है. तो नाउ एनी विलफुल एंड डेलिबरेट एक्ट विद द इंटेंट टू डेसिक्रेट, ठीक है, which must hurt the feelings, religious feelings of persons professing Sikh faith, इसमें कुछ physical acts and expressive acts दोनों को include कर दिया गया. So the act of damaging, defacing, burning, tearing, theft of any saroop or any part thereof, any spoken words which are capable of disrespecting, written words, signs, visible representation or through electronic means, which are capable of disrespecting the saroop or any part thereof. These are the kind of actions which will be considered as an act of sacrilege. ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इन्होंने वाइडन कर दी, एंड डेफिनेशन वाइडन करने की वजह से वो अब चीज आर्टिकल 19 के ग्राउंड पर इज बीइंग चैलेंज्ड इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पनिशमेंट क्या प्रोवाइड किया गया है? तो देखो, अगर अटेम्प्ट है सैक्रिलेज का, इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू सैक्रिलेज द गुरु ग्रंथ साहिब, so the attempt is punishable with 3 to 5 years of imprisonment with financial penalty of 1 to 3 lakh rupees and confiscation of property of the accused. अगर आपने willfully and deliberately desecrate किया है, ठीक है, you have successfully willfully and deliberately desecrated the Guru Granth Sahib, then you will get a punishment of 7 to 20 years with fine of 2 to 9 lakh rupees and confiscation of property. और अगर conspiracy की गई है, तो that is considered as an aggravated form of offense. If the conspiracy was being done with the intent to desecrate the Guru Granth Sahib or any swaroop or any part thereof, उस criminal conspiracy के लिए which is being done with the intent to disrupt the communal harmony in the society, the punishment has been increased from 10 years to life imprisonment, can be given with fine of 5 lakh to 25 lakh rupees and confiscation of the property. So this is the punishment which has now been given in the Amendment Act.
बट इसको सब्सिक्वेंटली तुरंत चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बिकॉज ऑफ जुरिस्डिक्शनल ओवररीच, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी. पॉइंट क्या है? पहला ग्राउंड ये दिया गया कि दिस डील्स विद अ काइंड ऑफ अ क्रिमिनल लॉ थिंग व्हिच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर स्टेट कोई लॉ बनाना चाहता है, अमेंडमेंट करना चाहता है, तो सेंटर के साथ कंसल्टेशन जरूरी है. So they are questioning the state's exclusive competence to create such kind of a law or to amend such kind of a law. That is the first ground. ठीक है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट गिवन है और उन 3 लिस्ट के बेसिस पे आप अलग अलग लॉ बना सकते हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं. बट क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट जैसी चीज को लेकर लॉ है तो यू नीड द कंसिडरेशन ऑफ द सेंटर एज वेल. तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर इसको क्वेश्चन किया गया. Fundamental rights infringement, specifically with respect to Article 19 of the Constitution. Because now any kind of an expression which is being done with the intent to desecrate or damage the Guru Granth Sahib, any Sarup or any part thereof, that is also considered as an act of anti-sacrilege. Okay? So they are challenging the severe tension with the constitutional guarantees of free speech and religious practice. And the last is proportionality, that is arguing the extreme nature of life imprisonment fails the test of proportional state response. कि सैक्रिलेज के लिए आप लाइफ इंप्रिजनमेंट के एक्सटेंट तक का पनिशमेंट दे सकते हो क्या? सो प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राउंड पर भी इस चीज को अब क्वेश्चन किया जा रहा है. बट लेट्स सी कि अब आगे इसमें होता क्या है. करंटली तो देयर इज अ पॉलिटिकल फॉल आउट बिटवीन अकाल तख्त एंड द गवर्नमेंट. लेट्स सी अब इसमें आगे होता क्या. ठीक है. नाउ दीज वर द 4 टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. Other than that, relevant topics from the month of June for the purposes of your paper includes Ayodhya Bar Association resolution, wherein they banned the lawyers from representing the accused in the Ram Temple theft case or misappropriation case, Telegram ban and Section 69A of the Act, Supreme Court or the report of the Supreme Court appointed task force on student suicide, Calcutta High Court on parading of the accused, and Supreme Court's victim protection plans for survivors of human trafficking. Now these 2 sessions we have covered as individual sessions on YT, and these 3 sessions we have covered, or these 3 topics we have covered under our weekly roundups. तो इन 5 सेशंस को, इन 5 टॉपिक्स को आप कवर कर लेना because they are important as well. These 4 topics which you have studied or which you have discussed in the class right now, they are additional topics. Other than that, these 5 are important for the purposes of your paper now because we have already covered them. So इस वजह से हमने इनको दोबारा भी कवर नहीं किया मंथली राउंड अप में. तो इन 5 को आप वहां से ध्यान से जरूर देख लेना. ये 5 टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट CLK फॉर CLAT 2027 प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे. ठीक है. So that's it for the roundup of the month of June. Rest, तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon, guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much.